Okay, good morning to all. Hi everyone. Good morning. Yes, Himar Singh. So in this session, we will be having the Turing machine, and we'll also see the differences between recursive and recursive enumerable languages. And also, I want to inform you that tomorrow we will have an extra session, same timings, 8 a.m. to 10 a.m. Mostly tomorrow we'll complete the theory of computation, so that you can have your own practice of all gate PYQs by watching the PYQ series that we have conducted in the last year. So we can utilize the time for gate preparation. Actually, good morning. Okay, till now, by this time, you know what is the difference between regular and context-free languages. Yeah, countable set is also covered in this session mostly, or next session. Yeah, you want to build a logic in TOC, just practice more questions, understand the models, then you can solve. The logic is not in TOC, logic is in the problem. Okay, TOC just represents a problem in different way using the model. तो आपको पता होना चाहिए countable set is mostly the mathematical topic. You can also discuss here because the TOC talks about computation, so you can talk about countability in TOC also. Okay, yeah. Okay, tomorrow in the next session, that's tomorrow, we'll have a practice up in Turing machine and as well as undecidability. But now let's begin the Turing machine by comparing with both finite automata and PDA. You should know how the Turing machine are different from the finite automata and PDA. Yeah, good morning, RJ. Okay, and in the world, if you want to solve any problem, we may not need finite automata, we may not need PDA, we mostly use the Turing machine. But why don't you study the Turing machine directly? The reason is it's very simple. You cannot work beyond your capabilities. First you will learn what you can do first time. So finite automata is so easy to understand. Then we'll add one stack to it, we'll learn PDA. Then now we are coming to the world to look at what beyond we can do better than PDA and finite automata. Okay, including them. Okay, yeah. Shine, good morning. Let's look into the definitions, and then mostly this chapter is about the theoretical learning. So don't learn like finite automata and PDA. वहाँ पर क्या finite automata and PDA, you can practice a lot of problems, you can design a lot of finite automata, you can write a lot of regular expressions, you can write a lot of context-free grammars, you can design a lot of PDAs, but do not try designing a lot of Turing machines. Even designing one Turing machine may take a single day if the problem is a little bit bigger. So you should understand how to design, that's it. But do not work for every problem that you wanted. That's why you study programming, algorithms. It's just Turing machines, right? Every Turing machine, if it is able to do it, that means you can write a program in a computer, you can write an algorithm. So these things are equivalent to the Turing machines. Good morning, Ashu. Royal, hi. Okay, so topics to be covered: recursive enumerable languages, recursive sets, and Turing machine, and also we'll look into closure properties. Even decidability and undecidability also part of this, but we'll also learn tomorrow specially to know more about undecidable concept. Okay, Turing machine and enumerable languages. First, let's look at what is the finite automata and PDA and Turing machine.
We know this finite beta just does regular languages computation. It can recognize regular languages. Yes or no? What PDA can do? It can recognize context-free languages. So CFL. What Turing machine can do? It does recursively enumerable languages. Recursively enumerable language or set. You can also call it as RE, or simply you can call REL. Okay, recursively enumerable language or set. So I hope you know these 2 points. So, have you remembered what is the configuration of the finite automata? Q, sigma, delta, Q naught, F. Here you have two things, delta DFA and NFA. And DFA and NFA both are equivalent. So you can follow any one of the machine, you can convert to other machine, right? You can see the algorithms how to convert NFA to DFA, very easy. So here DFA and NFA you can follow any one of the machine because other machine always exists. ये तो पता होगा आपको. For every regular language you have both DFA and NFA, and for every regular language infinite DFAs are there. For every regular language infinite NFAs are there, and you know also for every regular language only one minimum DFA is there, and one or more minimum NFAs are there. So many points are there to understand about regular languages. And what is context-free language? This is just simple to similar to the finite beta, but additionally आपको एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो स्टैक है. तो इसको मान सकते हैं यार फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक, ऐसा भी मान सकते होंगे. फाइनाइट ऑटोमेटा एडिशनली एक स्टैक है. बट कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही चेंज होता है. क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ, इनके साथ एक गामा होगा और जेड नॉट होगा. तो ये स्टैक रिप्रेजेंटिंग पैरामीटर्स है. जेड नॉट बॉटम स्टैक सिंबल है और गामा सारे स्टैक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. और ये ट्यूरिंग मशीन क्या है, अगर पीडीए से कंपेयर किया है तो ये हो सकता है आप पीडीए और यू कैन ऑल्सो कॉल 2 स्टैक पीडीए. अगर पीडीए के साथ एक और स्टैक है ये 2 स्टैक बन जाता है, 2 स्टैक पीडीए. और फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ एडिशनली 2 स्टैक दिया है तो इससे इक्विवेलेंट हो जाता ट्यूरिंग मशीन से. ठीक, ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशन को बदलना होता है, ऐसे डायरेक्टली 2 स्टैक ऐड करके नहीं करना होता, राइट. कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना होता बहुत. तो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ. ये तो देखा है हम फाइनाइट ऑटोमेटा आल्सो, पीडीए आल्सो, राइट. दे 5 पैरामीटर दोनों तीनों में है. बट यहां ये जो ट्यूरिंग मशीन है तो यहां पर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ये दोनों में हम रीड कर रहा था तो सिग्मा इज एनफ. अभी क्या चाहिए एडिशनली? टाउ. पूरा टेप में क्या करोगे वो सारे रिप्रेजेंट करना होता. सारे टेप सिंबल्स को कलेक्ट करने के लिए एक अल्फाबेट चाहिए, वो भी टाउ. ये टेप अल्फाबेट बोलते हैं हम. और बी, ये स्पेशली एक सिंबल स्टोर करेंगे टेप के अंदर. क्यों? टेप इनफाइनाइट है, यहां पर अनबाउंडेड है, तो टेप के ऊपर बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है अदर देन योर इनपुट. तो जो भी काम करना है तो ये ब्लैंक को रिप्लेस करना होता अदर देन योर इनपुट. ठीक है. ये बी क्या है यहां पर? ब्लैंक सिंबल. ये पूरा टेप में ये स्टोर होगा. अगर जो भी राइट करना है तो टाउ के अंदर इनपुट सिंबल्स भी होगा और ब्लैंक सिंबल भी होगा. एडिशनली नया सिंबल्स को भी अगर आप राइट करना चाहते हैं वो भी होगा. ये टेप अल्फाबेट है. इसमें कुछ डिफरेंसेस है. ये जो सिग्मा है ना बिल्कुल टाउ के अंदर है तो सिग्मा सबसेट टाउ बोल सकते हैं आप, है ना. ब्लैंक जो है वो टाउ के अंदर है. ठीक है. और टाउ यहां पर बिल्कुल सारे सिंबल्स को कवर करेगा, इनपुट एज वेल एज अदर देन इनपुट.
तो ये है डिफरेंसेस। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या किया है, सिर्फ स्टेट का काम होता है, सिर्फ स्टेट्स। यहां पर अलग अलग विद स्टेट्स यू ऑल्सो हैव स्टैक, स्टैक के अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं, यहां पर स्टेट चेंज कर सकते हैं और स्टैक के भी अंदर भी पुश कर सकते हैं हम। यहां पर कोई स्टैक नहीं होता है, सिर्फ आपके पास टेप होगा, टेप में राइट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं एक बार, है ना। ओके, यहां फाइनाइट ऑटोमेटा में ये टेप जो है ये फाइनाइट है हमेशा, कि यहां पर कोई फाइनाइट टेप स्टोर होगा, आपका हेड जो है यहां जाके हाल्ट होगा बस, इसके बाद इसको रीड करने के बाद तुरंत हाल्ट होता है मशीन, करेक्ट। ये है फाइनाइट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां पर पीडीए में क्या है, सिर्फ लेफ्ट राइट। पीडीए में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर जो भी दिया है लेट्स से डबल ए डबल बी इनपुट है तो इतना ही रीड करके ये हाल्ट होता है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में मूव होता है और इसके बाद हाल्ट होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट, है ना। बट ट्यूरिंग मशीन में जो टेप है पावरफुल है, आपको टू वे इन्फिनाइट चाहिए, टू वे भी बिल्ड कर सकते हैं, वन वे चाहिए वन वे भी कर सकते हैं। अगर आपका इनपुट लेट्स से डबल ए डबल बी एंड डबल सी है तो हेड यहां से स्टार्ट होता है, तो डायरेक्शन किसी साइड में भी ले जा सकते हैं। आप लेफ्ट में जाना चाहिए तो लेफ्ट में जा सकता और राइट में चाहिए तो राइट में जा सकता। तो इनके पास पावर टर्न अराउंड लेफ्ट राइट किसी डायरेक्शन में भी जा सकता, बोथ डायरेक्शंस जा सकता है। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो आपको डिसाइड करना होता है लेफ्ट जाना है राइट जाना है, इतना भी नहीं है। और इस ए को राइट करना चाहते तो वो भी आप कर सकते काम, है ना। ए को एक्स से रिप्लेस कर सकते और आगे जाके इस ए को एक्स से रिप्लेस कर सकते, जो करना है वो कर सकते हैं आप। बी को वाई से रिप्लेस कर सकते, बी को वाई से रिप्लेस कर सकते, जो चाहिए वो कर सकते हैं आप। और ये जो हेड है तो इन्फिनेटली आगे भी जा सकता और इन्फिनेटली पीछे भी जा सकता। तो आपको कंट्रोल करना होता है इस हेड को कैसे यूज करना है, कब हाल्ट करना है, ये आपके हाथ में होता है, राइट। यहां पर ये सारे सिंबल रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली हाल्ट होना चाहिए, यहां भी पूरा रीड करने के बाद ऑटोमेटिकली हाल्ट होना चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम देखो बहुत इजी है, ये इस दोनों में मशीन का प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब मशीन हमेशा हाल्ट होता है। जो भी मशीन डिजाइन करो, डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक, हमेशा हाल्ट होता है। क्यों, इनपुट फाइनाइट है, या इनपुट भी फाइनाइट है, बट मशीन हाल्ट होना जरूरत नहीं। मशीन यार हमेशा राइट जा सकता, हमेशा लेफ्ट जा सकता, थोड़ी देर राइट थोड़ी देर लेफ्ट। अगर कंट्रोल सही से नहीं किया, ट्यूरिंग मशीन नेवर हाल्ट में भी जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी नेचर क्या है वो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। गुड मॉर्निंग। अब इसी को एक और बार देख लेते हैं हम, डेफिनेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ा समझ में आ रहा है यार, यहां फाइनाइट इनपुट है, यहां भी फाइनाइट इनपुट है, यहां भी फाइनाइट इनपुट है, बट इनके पास जो है तो ये पावर नहीं है इनफिनाइट तक जाने के लिए। क्यों, टेप हमेशा बाउंडेड फाइनाइट रख देते, हम यहां भी फाइनाइट रख देते, तो पक्का हाल्ट होना चाहिए पूरा इनपुट रीड करने के बाद। यहां आपको कंट्रोल करना होता इनपुट कब राइट रीड करना है, कब लेफ्ट रीड करना है, ये आपकी हाथ में होता है, राइट। ये आपकी इनपुट छोड़ के बाकी जितने भी पोजीशंस है वो ब्लैंक सिंबल्स रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना होता है कब लेफ्ट जाना है कब राइट जाना है, ठीक है। पूरा इनपुट ब्लैंक है एक्सेप्ट योर इनपुट। और इस ब्लैंक को भी आप नया सिंबल से रिप्लेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, ओके। तो अभी क्या पावर आया इनके पास, अगर फाइनाइट ऑटोमेटिक के साथ एडिशनली देखो, ये सिर्फ रीड हेड है और राइट रीड ओनली टेप मान लो, अभी रीड और राइट करना चाहते हैं, रीड राइट टेप, ठीक है, कर सकते हैं। अभी टेप के ऊपर राइट भी कर सकते हैं, टेप से रीड भी कर सकते हैं। और एडिशनली देखो ये डायरेक्शन जो है इस दोनों में सिर्फ वन साइड, मतलब यूनि डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल हेड बोल सकते हैं आप। जो हेड को आप बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, अगर किया है तो ये ट्यूरिंग मशीन जैसे काम करेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ है ना स्टैक ऐड नहीं किया हम, सिर्फ कुछ पावर है वो एडिशनली अटैच किया है, वो
पहले रीड टेप था, अभी राइट भी करा है, और हेड जो है पहले वन साइड जा रहा था, अभी बाई डायरेक्शनल हेड है। अगर इस दोनों में एक को भी हटाया तो फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा काम नहीं करेगा। हेड यूनिडायरेक्शनल कर लिया, इवन तो रीड राइट टेप फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सपोज बाई डायरेक्शनल हेड है, इसमें सिर्फ टेप से रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, फिर भी वो फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे काम करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पर। अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन से पहले एक और कंपैरिजन भी करूंगा, वो है टाइप्स ऑफ मोशंस में। ठीक है, देखो यह फाइनाइट ऑटोमेटा टू टाइप्स होता है ना, ऑलरेडी पता है, डीएफए एनएफए, या दोनों की पावर इक्वलेंट है। यहां डीपीडीए अलग मशीन है और पीडीए अलग मशीन है। ये डीपीडीए लेस पावरफुल होता है पीडी से, तो इक्वलेंट कभी नहीं बोलते हम। तो यहां पर ट्यूरिंग मशीन टू टाइप्स होता है, डीटीएम एंड एनटीएम, और दोनों इक्वलेंट पावर है। ठीक है, डीटीएम का डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है एनटीएम से, आपको पता होगा। तो डीटीएम का डेफिनेशन क्या है? डीटीएम का अगर फंक्शन चाहिए तो क्यू क्रॉस सिग्मा नहीं होता, यहां पर टाउ होगा। क्यों? अभी पूरा टाउ के ऊपर रीड करना होता, सिग्मा पहली बार रीड करोगे सिग्मा दिखता है, बाद में राइट करने के बाद सिग्मा नहीं दिख सकता है। ठीक है, क्यू क्रॉस टाउ, तो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जाएगा। कोई टेप सिंबल रीड किया और दूसरे टेप सिंबल से राइट कर सकते, सेम टेप सिंबल से राइट करना जरूरत नहीं है। और डायरेक्शन आइदर लेफ्ट और राइट, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट और राइट। ये डीटीएम का ट्रांजिशन फंक्शन है। एनटीएम का कैसे होता है? एनटीएम क्यू क्रॉस टाउ, ये टू पावर चले जाता, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, तो क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस लेफ्ट और राइट, ये होता है। तो ये डीटीएम एनटीएम जो ट्रांजिशन फंक्शंस है अलग अलग है और अलग अलग डेफिनेशन है, बट दोनों ट्यूरिंग मशीन है और दोनों इक्वलेंट है। अगर आपके पास डीटीएम है तो एनटीएम भी है, अगर एनटीएम है तो डीटीएम भी होगा यूजिंग एल्गोरिथम्स। फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे काम करेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा जो करेगा वही ट्यूरिंग मशीन कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। राइट, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग दिखेगा, बट जो फंक्शनलिटी है उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझना होता। फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होता बट इक्वलेंट टू फाइनाइट ऑटोमेटा होता। अगर ट्यूरिंग मशीन में थोड़ा पावर को कम किया है, लाइक रीड और राइट हेड को रीड हेड बनाया, और टेप रीड राइट टेप बोलते, हेड भी बोलते, रीड राइट टेप को रीड टेप बनाया और हेड को यूनिडायरेक्शनल बनाया, फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे ज्यादा नहीं काम करेगा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बनता होगा बट इक्वलेंट टू फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे काम करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा डेफिनेशन अलग है, इनका डेफिनेशन अलग है ना। ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन क्या है? कोई भी इनपुट दिया है लेट्स से, और ये एक्सेप्ट्स एल मान लो, इफ डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल, क्या है? हॉल सेट फाइनल, ये पता है ना सबको, कितने पाथ से वो टाइप ऑफ मशीन डिसाइड करेगा। डीटीएम में तो एग्जैक्टली वन पाथ, एनटीएम में तो एटलीस्ट वन पाथ। इफ डब्ल्यू नॉट बिलोंग्स टू एल, हॉल सेट नॉन फाइनल, वो टाइप ऑफ मशीन डिसाइड करेगा। डीएफए है तो एग्जैक्टली वन पाथ होगा, एनएफए हो तो जीरो और मोर पाथ्स होगा विच हॉल सेट नॉन फाइनल। फिर भी ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए।
और पीडीए क्या है? ये पीडीए डिटरमिनिस्टिक नहीं है, फॉर्मेटा कोई भी हो सकता है, डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक हो सकता है, बट ये नॉन डिटरमिनिस्टिक है। तो अगर W दिया है, सपोज L को एक्सेप्ट किया है, इफ W बिलोंग्स टू L एटलीस्ट वन पाथ हॉल सेट फाइनल और इट कैन मेक एम्प्टी स्टैक यूजिंग फाइनल स्टेट मैकेनिज्म, ये डेफिनेशन होता है। अगर एम्प्टी स्टैक मैकेनिज्म यूज किया, डेफिनेशन थोड़ा बदलता है। If W belongs to L, at least one path can make empty stack. ठीक है, so यहां पर वैलिड स्ट्रिंग का डेफिनेशन अलग अलग होता है, क्योंकि यूजिंग फाइनल स्टेट ये डेफिनेशन होता है, यूजिंग एम्प्टी स्टैक ये डेफिनेशन होता है। तो दो टाइप्स ऑफ पीडीए होता है ना, ये यूजिंग फाइनल स्टेट मैकेनिज्म है, ये यूजिंग एम्प्टी स्टैक मैकेनिज्म है। अब ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन, टीएम, suppose TM accepts L, if W belongs to L, TM halts at final, no doubt, ये डिटरमिनिस्टिक है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है, उनके ऊपर एग्जैक्टली वन पाथ, एटलीस्ट वन पाथ, आप चेंज कर सकते हैं डेफिनेशन को। इफ W नॉट बिलोंग्स टू L, तब में देखो क्या है, ये तो नॉन डिटरमिनिस्टिक है इसलिए नहीं बताया हम, ऑफकोर्स हॉल सेट नॉन फाइनल, ये भी बोल सकते हैं आप, इफ W नॉट बिलोंग्स टू L, हॉल सेट नॉन फाइनल, जीरो और मोर पाथ्स, जस्ट ठीक है। ये देखो, ये डेफिनेशन यूज करो, बिलोंग्स टू L हॉल सेट फाइनल, नॉट बिलोंग्स टू L हॉल सेट फाइनल। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम, हॉल सेट नॉन फाइनल बोलेंगे क्या यहां पर, इज इट हॉल सेट नॉन फाइनल? वी डोंट नो, ये प्रॉब्लम होता है ट्यूरिंग मशीन में, इनका प्रॉब्लम है। अगर स्ट्रिंग इनवैलिड है, हो सकता है ये नेवर हॉल्ट केस में भी जा सकता होगा, बट स्ट्रिंग इज वैलिड, हॉल सेट फाइनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ स्ट्रिंग नॉट इन L, इफ स्ट्रिंग इनवैलिड, TM may halt at non-final or never halt. So इनके पास दो चॉइसेस होगा, आइदर इट में halt at non-final और never halt, दोनों इनवैलिड स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, so again in English, Turing machine, if the string is valid, Turing machine always halts at final. If the string is invalid, Turing machine can halt at non-final, or no need to halt at non-final, or it may never halt. That means Turing machine may enter into infinite loop, like hamesha. It might be going always right, or it might be going always left, or sometimes it might be going left, or sometimes it might be going right. So left, right, left, right, left, right. So if the string is invalid, it can have the two choices. It can halt non-final, like final terminator, or it may never halt. Okay, this is a very important definition of Turing machine, like a program. So you have written a program today, and you understood when, like say you want to check the prime number, given number is prime or not. So you have checked only for the positive numbers. So this program works for when I give a positive number, it will tell us prime or not. If I give a negative number, my program may halt by saying not prime, or may go to infinite loop. Maybe you did not handle the loop for the negative number, how to check. So it depends on, like if the string is invalid, either it may halt at non-final or it never halt. Because you are worried about halting at final for all the valid strings, definitely every valid string halts at final, no doubt about it. Only the problem with the invalid strings. Sometimes invalid strings may not have a logic, then no need to worry about it. Okay, let's try. Now we'll just try very simple machine before going into theory. Okay, very simple problem we'll do first. Okay, suppose I want to do A star B star.
A star, B star, you have a finite automata, you have a PDA, you also have a Turing machine because it is a regular language. When the language is regular, आपको पता होगा finite automata भी होगा, PDA भी होगा, Turing machine भी होगा. finite automata कैसे होगा? कोशिश करेंगे तीनों करने के लिए, ठीक है. फाइनाइट ऑटोमेटा मैं डायरेक्टली डिजाइन करूंगा, आपको समझ में आएगा. एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा और एनी नंबर ऑफ एस एक्सेप्ट होगा, और डायरेक्टली 20 आया तो वो भी एक्सेप्ट होगा. ये होता है फाइनाइट ऑटोमेटा. ये फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, एनएफए डिजाइन किया बस. ये फाइनाइट ऑटोमेटा तो है, ठीक है. एनएफए या डीएफए जो भी राइट. अगर डीएफए डिजाइन करना, यहां से ए नहीं आना चाहिए, डेट सेट में चले जाना. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट सेट अभी डिजाइन करना. यू नो नीड डिजाइन डेट सेट राइट नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड इट्स ए स्टार बी स्टार, करेक्ट और नॉट. Some non-deterministic finite have designed A star B star, only A is accepted, only B is accepted, and A is followed by B is accepted, epsilon accepted. So all the possibilities are accepted here. Now if you want to design a PDA, you can copy paste this machine, just write, you want to design a PDA, just simply say that A comma epsilon slash epsilon. I don't want to use the stack, that's it. And your stack is not required. Done. This is a PDA. Every finite you can convert into PDA. So instead of epsilon slash epsilon, you can also write Z0 slash Z0. Anyhow, you don't want to use a stack. So Z0 is there. Now after that, after reading also Z0 is there. So you can write two ways, Z0 slash Z0 everywhere, or you can write epsilon slash epsilon everywhere. So this also accepts exactly A star B star. You give any string from A star B star, it will alt at this final or this final, depends on your input. You give only A's, it will alt here. You will also give the B's, then it will alt here. Only valid string, it will alt at final. Invalid, you don't have a path, it will assume that it will go to dead state. Okay, Turing machine. Now in the Turing machine, how to represent? So far we have not designed even single Turing machine, right? So some people may get a problem. Suppose I want to read, I don't want to write. Let's say read, I want to read A and don't want to write, but some people want to read A but write with, let's say, X. Both are different, right? Read A simply but don't want to write, then how to do it? Suppose some people want to read and also they want to remember it, then they have to write with X, something like that. So if you want to read A but don't want to write with anybody, so how you represent? Like you have a tape and maybe you want to move right or left, so I'll just decide myself. So you are at Q and you are moving to the right, that's it, and you are staying, let's say, at Q or Q dash. Okay, if you are staying in Q, then self loop. If you are going to other state, let's say Q dash. Now what is the configuration from Q? By reading A, you have not written with anybody, so keep A as again. And which direction you want to go? Right. What is this? R. R means right. So you can say R, Q dash. So this is how you represent the reading A, but you don't want to write with any other. Now this one, you want to read A, but you also want to write with somebody else, let's say X, and you want to move right direction. Let's say you are moving from Q to Q dash. Then entire configuration, how will you represent with the help of states? From Q, you are going to Q dash by reading A but replacing with X and moving which direction? Right. So this kind of knowledge is required when you are designing Turing machine. And for many people, this thing is not easy because now this time they need to work with the configuration. So far finite automata, they were so easy because these two are not there. Now these two are very important. Are you writing with somebody else? Are you moving right or left? Everything you should know before designing. So you need to work manually before designing TM, right? Directly many people cannot design TM without working on in a single input or without working on functionality of the machine. Got it everybody, how to read and write? Give us good morning.
So whenever you don't want to write with anybody but you want to read it, then use that one, either right or left, depends on your choice. The other one, you want to remember it, then you need to replace with somebody else, so that when you come back you can remember it, because you have the power. You can go forward for some time, you can come back whenever you want it. You decide based on the problem. Okay, now this problem you don't need to come back. It's a regular language, right? Regular language, you don't need to remember anything. Yeah, you can repeat the video to repeat the transition. Nothing is there. Okay, so understand what is there. Okay, Juleka, just watch the video one more time, 2-3 times. Nothing happens, right? Everything is there. What you are reading, should I write like this? Reading A, writing nothing from state Q, going to Q dash. Do you require every detail here? The waste of going to Q dash, and which direction you are taking? Right direction. All these things are useless here. Everything is visible here. Okay, only the thing is definition is very important. How did you get this definition? Q cross tau arrow, Q cross tau cross left or right, if you are using DTM. So this one only represent right. This is a delta definition, so I just use this. Q comma A is equal to Q dash comma A comma right. That's it. This thing only I kept here. The Q is the present state, A I am reading, right? You are reading. You are writing with nothing, means you are writing with the same symbol. And direction, it's a waste of time. You are moving to Q dash. Okay, similarly here, you are reading with A, you are writing with X. All these things you have to remember at any cost. If you don't, then you will lose the Turing machine. Done? Okay. Now see, anyhow you don't want to remember anything, right? So what you can do, very easy. This finite beta you can convert to this. What you can do with this A, you replace with A only. So now we will design different way. Of course you can also take this, not a problem, but we always design different way. Okay, I'll copy everything as it is. I'll copy everything as it is. See that? But I don't keep the same final. I'll just keep one final to understand the problem easily. Now this A, what you do additionally? A comma R. So the same thing was happening here. The same thing was happening here, but we don't mention that A is only there after reading. But here you need to mention, because it has the writing capability, it has additional functionality, it can replace with somebody else. So you need these two parameters. Are you moving right or left? They are always moving right. You don't need to mention moving right, replacing with A and moving right, because they don't have any other feature. Like A cannot replace with some other symbol, it cannot move left, so no need to mention other two. But here you need to mention other two, because this can write with some other symbol, it can move even left, so you have to mention these two symbols. Now B, you are replacing with B and moving right, is exactly same as what is happening there. And here B comma R. Now, so you got this right. Now how to go to the final? See, both are final. That means the blank, because the input, let's say I am giving you AAB, the blank can come after reading these three symbols, right? So when the blank comes, go to the final. This blank will help us to go final in this Turing machines. Of course you don't want blank, you can make this to our final, that's okay, right? But by the standard Turing machine definition, we have the blanks before and after if it is two-way infinite tape. So when you are starting from here, how do you know end of the input? When you see the blank. How do you know end of the input? Don't say anything. When the input is over, automatically halts, because there is nothing to do after that. So for these two machines we don't consider, but that's why, you know, when you implement them practically, you may use end of the input for these two, but here already end of the input is there, blank. Okay, when the blank comes from here, you should go to the final. Blank, you may replace the blank, move right or left, doesn't matter. Move right or left, doesn't matter. Go to final, because this is the final and this is also final, so there also blank can come. So from here also blank can come.
Now this is how you build Turing machine easily. Now any regular language you can approach the same concept. These two are finals, that's why these two pink colors are going to the final. If this is only the final, from here only you will give, you will not take from here. तो आपको समझ में आना चाहिए. तो Turing machine is always possible to convert from given finite automata. So we have an algorithm from finite automata to PDA, finite automata to Turing machine. Okay. So for every regular language you can design a PDA, you can design Turing machine. Got it? So first example is so easy, you are not putting any effort, you are not remembering anything. Just read it, move right, move right, move right. That's it. That's why you are just moving right, not doing nothing else. Because this problem is regular language. For regular language, we no need to remember anything because just states are enough to remember. But for context-free languages, the states are not enough. You need also stack. But anyhow, this is not a context-free language, so you don't need to worry about the stack. We are not using the stack here also. That's why we always mention whatever is there we keep the same, whatever is there we keep the same, whatever is there we keep the same. Because we are not looking at the stack here. Now the second problem. Directly we'll go to Turing machine now. We don't want anybody else. Okay. A power n, B power n. You already know PD how to do it. Now we don't convert PDA to Turing machine. Of course there are algorithms exist, but we don't do it. Now A power n, B power n. A power n, B power n. Now, everybody knows the concept, right? What is epsilon, AB, double A, double B, and triple A, triple B, and so on. Now to understand the problem, okay, just give me a second. Okay. Now take any longer input to understand. Let's say triple A or 4A, 4B. Is it valid string? Now we don't have a stack to remember it, but what we have? Anybody? Now, head starts from here. Head starts from here. Now how do you design a Turing machine? By writing with somebody else. Anybody? How do we check this four number of A's, number of B's are equal? Anyone guess? It's just like writing a program. That's why designing a Turing machine is nothing but writing a program in general. They are both equivalent. They are equivalent. So first you work on given input, then design a TM. You should know how to accept the given input first. So I'll wait for your answer. What is your concept? यहाँ पर कैसे इस A's and B's को हम कंपेयर कर सकते हैं? Blank, in between. Where is the in between? What I should do? No, don't change it. Don't change it. Of course you can do it. If you really are looking for, I want to put a blank here, yes you can do it, but that takes much time. You all these 5 B's you have to move here and you have to put a blank here and then you have to compare this to, it takes a lot of time. It does also one good logic. Any other? So here we see we have the capabilities, right? This Turing machine can move forward, backward. Yes or no? ये जो ट्यूरिंग मशीन है आगे भी जा सकता, पीछे भी जा सकता. तो एक काम करेंगे हम, एवरी स्कैन में एक एक हम ए एंड बी कंपेयर करेंगे. पहली स्कैन में, फर्स्ट स्कैन में इस ए को एंड बी को कंपेयर करेंगे. इस दोनों सिंबल को हम रिप्लेस करेंगे कुछ और सिंबल से, लेट्स से एक्स वाई. इस ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे, इस बी को वाई से रिप्लेस करेंगे और फिर वापस आएंगे हम. फिर ये इसका काम करने के बाद यहां तक जाएंगे हम और फिर वापस आएंगे हम और आके फिर सेकंड स्कैन करेंगे. सेकंड स्कैन यहां से सेकंड स्कैन करेंगे कहां तक? यहां इस बी तक. तो इस सेकंड स्कैन में हम इस ए को और इस बी को करेंगे हम इस सेकंड स्कैन में. ये जो सेकंड स्कैन है बिल्कुल.
और इस ए को x, इस b को y। क्यों फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं ना। तो यहां पर ट्यूरिंग मशीन को एक फायदा है, इट कैन राइट विथ सम अदर सिंबल्स, इट कैन मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये जो लॉजिक है ना, तो इट्स अ मोर पावरफुल देन द स्टैक। ये क्यू का ऑर्डर भी चेक कर सकता, स्टैक का ऑर्डर भी चेक कर सकता, ट्री का ऑर्डर भी चेक कर सकता, कुछ भी कर सकता अगर इनके पास लॉजिक है। तो हम देखो एवरी स्कैन में 1A 1B कैंसिल हो रहा है कि 1A 1B को हम दूसरी सिंबल से राइट कर रहा है, और नेक्स्ट स्कैन में और थर्ड स्कैन में, फोर्थ स्कैन में और फिफ्थ स्कैन जब आया है तो A एंड B नहीं बचना चाहिए। क्यों A नहीं बचा तो B भी नहीं बचना चाहिए। तो ये बात समझ में आया। तो एवरी स्कैन विल कंपेयर 1A 1B, या 4 स्कैन के बाद 4A 4B खत्म हो जाएगा, और फिफ्थ स्कैन में इनको A नहीं मिलेगा। क्यों यहां A नहीं है, ये फोर्थ A होने के बाद जब वापस आया ना, या A नहीं मिलेगा Y मिलेगा। अगर Y मिला तो इनको पता होना चाहिए यार B भी नहीं होना चाहिए, तो आगे जाके स्मॉल b नहीं मिलना चाहिए, डायरेक्टली ब्लैंक B मिलना चाहिए। पूरा Y को स्किप करने के बाद सिर्फ ब्लैंक B मिलना चाहिए। तो लास्ट स्कैन में ये होता है, लास्ट स्कैन में बता रहा हूं, फर्स्ट स्कैन हो गया, सेकंड भी हो गया, वैसे ही थर्ड फोर्थ कर लो। फिफ्थ स्कैन में क्या होता है, फिफ्थ स्कैन में यहां एक बार दिखाता हूं, B X X X X Y Y Y Y B। तो अब लॉजिक यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर Y है, एक्चुअली यहां स्मॉल ये मिलना चाहिए, देखो यहां A मिला तो, बट यहां इस A के बाद ये मिलना चाहिए था, बट यहां A नहीं मिला, क्या मिला, Y मिला। तो ये यहां Y मिला, तो इनके पास एक ही काम है, तो सारे Y's होना चाहिए, डायरेक्टली ब्लैंक रीच होना चाहिए, तब एक्सेप्ट करो। क्यों ओनली Y's होना चाहिए। अगर यहां पर एक्स्ट्रा B है तो नॉट इक्वल है, तो कैपिटल B नहीं रीच करेगा, ओनली Y स्किप करके कैपिटल B रीच करना चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे Y's को स्किप करके ब्लैंक B मिलना चाहिए। पहले लॉजिक समझ में आया क्या सबको? जब तक लॉजिक समझ नहीं आता आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं करना चाहिए। क्यों ट्यूरिंग मशीन क्यों डिजाइन करेंगे जब लॉजिक ही समझ नहीं आया? क्या करोगे ट्यूरिंग मशीन डायग्राम में, राइट? सर्कल ट्रांजिशन लाइंस नहीं बनाना है ना हमको, पूरा कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके हम लॉजिक बनाना है। एक इनपुट में भी लॉजिक समझ में आया तो ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना बहुत ईजी होता है हमको। एनीबॉडी हैविंग ए डाउट? ये थ्योरेटिकल लॉजिक है यार, हम तो इंप्लीमेंट करेंगे ना, कंप्यूट करेंगे ना ट्यूरिंग मशीन से। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हमको फॉरवर्ड बैकवर्ड स्कैन करना है, तो ये काम खत्म नहीं हुआ ना। और अब इसी प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट कंप्यूटेशन के साथ करेंगे हम। फॉरवर्ड बैकवर्ड तो करना है यार, कितने ए से, 4 ए से, तो 4 बार स्कैन करना होता फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो आप एक और बार ब्लैंक ए ए ए ए और बी 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 एंड ब्लैंक, ये टेप है ना। आप बताना मुझे, ये मान लो या क्यू नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्यों पहले जो सिंबल है यहां पर है, तो ट्यूरिंग मशीन रैंडमली स्टार्ट नहीं करता है ना। जो फर्स्ट सिंबल जो है वहां पर हेड पॉइंट करेगा, आपको डिसाइड करना राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, किस सिंबल से राइट करना है, आपको डिसाइड करना होता। पहली बार हमको ये काम करना होता, क्यू नॉट ए किससे रिप्लेस करना है, एक्स से रिप्लेस करना है। क्यू नॉट का काम यही होता है, क्यू नॉट का जॉब ये है रिप्लेस ए विथ एक्स, कुछ और काम नहीं है इनका। जब तक ये मिलता रहेगा तब तक ये x को रिप्लेस करेगा। तो पहली बार ये को x से रिप्लेस किया है तो तुरंत डायरेक्शन चेंज होगा एंड स्टेट Q1 में जाएगा। ठीक है, ये राइट मूव है, लेफ्ट मूव नहीं है, राइट, याद रखना। तो Q0 का काम है रिप्लेस a विथ x एंड देन गो टू Q1। बात समझ में आया? ये एक फंक्शन जैसे है, ये Q0 एक फंक्शन जैसे काम कर रहा है। कोई भी इस फंक्शन में आया है, इनकी काम क्या होता है, a को रीड करके x से रिप्लेस करके नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा Q1। ठीक है, और Q1 का काम क्या है, b फाइंड आउट करना है। यार b फाइंड आउट करने के लिए इनके पास बहुत टाइम लगता है, b बहुत दूर भी हो सकता है। अभी तो डायरेक्टली a के बाद मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, यहां वाइस होगा, वाइस के बाद b होगा, तो इनके पास बहुत काम होता है। ठीक है,
इनको बहुत सारे स्किप करना होता है। पहली बार तो सिर्फ ए को स्किप करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम वाई भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहां वाई भी होता है। तो यहां पर पहली बार स्किप ए है, नेक्स्ट टाइम वाइस को भी स्किप करना होता है। तो राइट डायरेक्शन में Q1 ऑन ए राइट, Q1 ऑन ए राइट, Q1 ऑन ए राइट, Q1 ऑन बी, यहां पर आपका काम Q1 का काम स्टॉप होता है। Q1 जब भी देखा है तो Y से रिप्लेस करके, और ये देखो अब तक तो राइट गया है, अब तक पूरा राइट डायरेक्शन, पहली बार लेफ्ट में आएगा और स्टेट चेंज होगा Q2। Q2 का काम क्या है, ये Q2 पूरा रिवर्स का काम करने के लिए मदद करेगा। रिवर्स मतलब अब Q2 यहां पॉइंट करेगा, क्यों लेफ्ट आया ना, यहां से लेफ्ट आया, तो Q2 या देखो सारे एस को स्किप करके इस एक्स को जब देखा है ना, तुरंत राइट करके Q0 को एंडर, क्यों Q0 नेक्स्ट टाइम यहां से स्टार्ट करना है ना, Q0 यहां से यहां काम खत्म हो गया, नेक्स्ट Q0 का काम यहां होता है, नेक्स्ट Q0 का काम यहां होता है, राइट। एवरी स्कैन में Q0 अलग अलग पोजीशन में स्टार्ट करता है, तो Q2 को पता है Q0 कहां से स्टार्ट करना है। Q2 knows where Q0 should start. So Q2 knows that Q0 should start from here, right? Q0 should start from here. तो कैसे पता? How it knows? The Q2, when it is moving left direction, when it sees the first X, see now this side, when it sees the first X, then after the first X, immediately A should be there. If not there, that's okay. But if it is there, definitely after the first X in the reverse direction. Okay? So Q2 is trying to find out where is the first X. Here is the first X. And when it sees the first X, so now they will also write Q1 work is finds B and replace with Y. Then move left to the left and give to the Q2. So Q2 come is what? Moving back direction. Find first X in reverse direction and give to Q0. So now Q0 is starting from right side, right? You move to the right and give to the Q0. So Q0 will start from here. This work will keep on continue for all the scans, right? But this is not enough. This is only the first scan, right? It's just the first scan. But we will do third scan also, just to understand. Only first scan we did forward and backward. Now we'll do other scan. Okay, we'll do, let's say, randomly 4 years, right? Third scan we'll do randomly. Okay. We'll also know exactly what Q0 will do, what Q1 will do, what Q2 will do. Okay. We'll directly go to the, let's say, third scan. What happens when you are doing third scan? This A might be replaced already with X, and this B already replaced with Y, and now see Q2 and over to Q0. This is the Q0 beginning, right? In the third scan, the Q0 will start from here because Q2 is started from here. It will skip all of them, and here Q0 will start, because when Q2 sees the first X, it will go right and it will give to the Q0. So in the second scan, in the backward, the Q2, when it sees the first X, it will move to the, see, in this process, if you forget even one sentence or one concept, you don't get entire idea. But that is the reason initially I told you what we are going to do here. We are moving forward backward. In the forward, 1A 1B will compare. In the backward, we'll try to find out the first X and then move to the right. There you will find the next A. See, after 2 scans, the third scan A is here. How do you know that? When you're coming backward, you find this X and move directly immediately to the right. So this concept we already discussed it. Okay. Up देखो Q0 on A. What we do? Replace with X and move to the Q1. And what is the Q1 job? To find the B. Now earlier we did one thing, skip A's only. Now A we have to skip, Y we have to skip. Now see that, skip both A's as well as Y's. Both you have to skip. That is the problem. Y is not the input. That's why you did not see in the first scan. See, X and Y not there here, only A and B. You were writing X and Y. That is the reason in the first scan you were not able to see that X and Y. Okay. Now skip A's and Y's, and Q1 when it sees the B, it will replace with Y and it moves left direction, gives to Q2, and Q2 now look at
It's starting from here, right? It starts from here and it's going to find out the first x in the reverse direction. This is the first x, and in this process it has to skip many things. It has to skip y's, a's, both of them it has to skip, a's as well as y's. Y's are there, a's are there, then it can find the x. So this y's you may not see in the first scan, but now you will see it, because in the third scan, fourth scan you can see them, even in the second scan you can see them. So q2 will hand over to q0. Now this is the right thing to do. What is the q0 job? Replace a with x. What is the q1 job? Skip a's and y's to find the b, and also when it finds the b, replace with y. And what is the q2 job? Skip a's and y's to find the first x. When it finds the first x, move right and give to the q0. And what is the q0 job now? Repeated. It's a recursive call, that's it. Okay. Now directly we can go to the last and we can decide. And what happens in the fifth scan? When all four scans are over, here also x comes. When it sees the x by q2 and it will give to q0, q0 will see the y. When q0 see the y, give to some other new state q3, q3 will skip all the y's to reach the blank. So that is the last scan. Last scan directly I am writing here. So q0, what is the job? Replacing a with x. And what is the q1 job? Skip both y's and what are they? A's and y's. Y's as well as a's. Then replace b with y. What is the q2 job? Skip to find the first x. Skip a's and y's in left direction, in reverse direction. You know, reverse means left here, right? And when it finds the first x, and move to the right. That's it. Now we have one more, q3. Can you find out what is the q3? The last step, q3. The last scan, we are going to do something now. Let me complete this process also. Even this a is over, replaced with x, this be replaced with y. And when q0 points here, when q0 points here, why it points? Because q2 when it sees the first x in reverse, इनको पता है यार q2 को q0 को देना है, तो q0 यहाँ पर है या a होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो क्या है? y है. इसका मतलब है सारे a's completed. It means all the a's are over. तो when q0 को पता है यार यहाँ पर ये नहीं है, तो y है, इसका मतलब सारे a's over. इसका मतलब सारे 20 भी y से राइट होना चाहिए. तो q0 को पता है यार ये खत्म हो गया, तो 20 भी खत्म होना चाहिए. तो q0 को पता है यार y मिला है, तो तुरंत किसी और स्टेट में देख चले जाते q3. लेट से q3 should only see the y to reach the blank, only skip y's, nothing else. जब q3 को ब्लैंक मिला है तो इसका मतलब है एग्जैक्टली a's and b's are equal. अगर ब्लैंक नहीं मिला है, बीच में a और b मिल गया, तो इनका मतलब यहां पर इनवैलिड स्ट्रिंग है. तो जब q3 को ब्लैंक मिला है, ब्लैंक मिलना चाहिए, देन इट विल गो टू फाइनल, मे बी qf. बात क्लियर? ये लास्ट स्टेप में करना है. लास्ट स्कैन फिफ्थ स्कैन मान लो उसको. 4 स्कैन्स में एस एंड बीस को कंपेयर करेंगे. फिफ्थ स्कैन, लास्ट स्कैन में हम वो फिफ्थ सिक्स सेवंथ कोई भी हो सकता, स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है, राइट? नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बीस, ये तो एग्जांपल है, बट एक्चुअल इनपुट में यार 100 एस 100 बीस भी हो सकता, सेम काम करेगा, राइट? क्यों? ये जो ट्रांसिशन है सबके लिए करेंगे हम, सिर्फ 4A 4B के लिए काम नहीं करेंगे. 100A 100B के लिए भी काम करेगा, सेम कॉन्सेप्ट, बट रिपीटेड होता है वही कॉन्सेप्ट, राइट? और Q3 का काम क्या है? Q3 skip all y's to reach the blank. If it reaches the blank, go to the final. देखो ये जैसे प्रोग्राम लिखते हैं हम वैसे ही, ये 4 फंक्शंस है, तो यहां पर 4 फंक्शन का काम समझ रहा है हम. ये फंक्शन का काम क्या है? ए को एक्स से रिप्लेस करना है. ये फंक्शन का काम क्या है? वाइस एंड एस को स्किप करके बी को फाइंड करके बी को वाई से रिप्लेस करना है. Q2 का फंक्शन का काम क्या है? एस एंड वाइस को लेफ्ट साइड में स्किप करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और जब एक्स मिला है और तुरंत Q0 को देना चाहिए. और Q3 का काम क्या है? स्किप ऑल द वाइस टू फाइंड द ब्लैंक. ये सारे काम है, राइट? जब तक ये काम समझ नहीं आता है, ट्यूरिंग मशीन कभी पॉसिबल ही नहीं है डिजाइन करना. ठीक है, सबको समझ में आया क्या?
If anybody not understood any of this, then please don't design Turing machine. पहले ये समझना, उसके बाद Turing machine डिजाइन करना. क्यों? पहले इनपुट को कैसे स्कैन करना है, कब किससे रिप्लेस करना है, right? You should know it. Now you are ready to design. You are ready to write a program if you are programmer, right? इसलिए बोलते हैं यार सर आई एम नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग. यार ये डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना नहीं है दुनिया में. पहले प्रोग्राम लिखने के लिए जो कंप्यूटेशन चाहिए उसके ऊपर काम करना होता है, तब गुड प्रोग्रामर बनोगे आप, राइट? बहुत लोग देखो कॉलेज में, सर मैं गुड प्रोग्रामर नहीं. यार प्रोग्रामर किसको चाहिए यार? हम प्रोग्रामर नहीं बनना चाहिए, हम लॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए. ये कब होंगे? उनकी जो एप्टीट्यूड की नॉलेज चाहिए, जो मैथमेटिकल लॉजिक चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट? प्रॉब्लम को लेके पेन एंड पेपर से सॉल्व करो, एनफ है. प्रोग्राम लिखना जरूरत ही नहीं है दुनिया में. आप एक दिन प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स लिख सकते खुद ही, बट उससे पहले प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व करने के लिए काम करना होता है, ठीक है? इसलिए कभी कभी यार गुड कंपनीज में वो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देखते भी नहीं है और उनकी क्वालिफिकेशन भी देखते नहीं है. अगर आपके पास गुड लॉजिकल स्किल्स है, प्रोग्राम लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है? कृष्णा गुड मॉर्निंग. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, तो हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे. चल क्यू नॉट. फर्स्ट क्यू नॉट का काम क्या है? रिप्लेस ए विथ एक्स एंड मूव टू द क्यू वन, राइट? ए read it, replace with x, move which direction? Right. So everything you should run in your brain. When q naught reads a, it replaces with x and moves right. See, when you read any Turing machine in the world, you should do the same thing. Oh, from q naught, when a comes, it is replacing with x and moving right. This thing should be done manually. Take the a and move and replace with x and take right. So this concept should run behind this transition, right? And you are moving to q1. And exactly what we did there, we are just putting in the diagram. And what is the q1 job? Here, skip both y's and a's. And when b comes, replace b with y. So there are many jobs here. One, skip y's. First a's will come, any order doesn't matter, because we know we are ensuring that first a's will come, then y's will come. So q1 job is replace or skip a's. How do you do skip a comma r means skip a, because you should not write with anybody else. And skip y comma r. Any of first a's will replace with x, b will replace with y. We guarantee that. So this order, definitely first a will come, then y will come. So no need to worry about it. Then when b comes, it should replace with y and move left. Now direction changes because one complete scan is over. Do you see that? Here 1a scanned, here 1b scanned. That means 1a, 1b is cancelled indirectly. Now what is the job? Now onwards, you will need to do the reverse scanning. What is the q2 job? You can look at. Skip a's and y's in the reverse direction to find the x. So q2 job is to skip the y's and a's. Y left direction, and after y's a's will come. The a left. So if you do this skipping y and a's, then you will find the x. When you find the x, give to q naught, but direction should change. We are going reverse left direction. Now we should go to the right because we found the first x, and keep the first x but move right. Now did you see one left and right? This is the first time left we went, and this is the right we are moving now. So this is a forward direction and this is the reverse direction. Now we are turning back to the forward again. Now the second scan will continue, and the third scan will continue, and so on. And when the last scan, when all the a's and b's are replaced with x and y, then q naught will not see any more a. What it will see? Instead of a, it will see the y, because this after a's, b's are there, and that b's are replaced with y's. So when it sees the y, now its job is to ensure that remaining are only y's. So that is why we need a q3 help. q3, what it does? Skip all the y's. If you don't ensure that, then what will happen? Triple a
triple B, even A will accept, because you are not ensuring that this is not there. Here only blank should come, then only it is valid, right? So now Q3 job is to skip all the Y's, and when it reaches the blank, then now doesn't matter. Do whatever, replace with the blank, move right or left, go to the final. And to accept epsilon, this will not help you. What you do from Q0, it should see the blank. Okay, dash you do whatever. Blank, replace with the blank, move right. Mostly we do that, but it's okay. You can do anything there. That's why we put the dash. Okay. So to accept the epsilon, special input, and remaining all the inputs, it will work on other path. Is it clear? And this bigger Turing machine, anybody tries to understand without working on input, it will be nightmare for them. Okay. That's why many students, designing Turing machine, they try to remember, but it will not work, because it's not for remembering, it's understanding the computation. Correct? It's not about this problem. Every problem, it takes much time. That's why for exam point of view, you should know how the Turing machine works. They will give you 1 or 2 or 3 states, worst case, and come very simple machine, so you can easily understand. Because in competitive exam, why don't they give Turing machine? Because understanding itself takes more than 5 minutes sometimes. That's why they don't expect you to work for 5 minutes. Hardly they will decide, 2 to 3 minutes you should get the answer. That kind of machine they can build for you. Okay, got it? Now using the similar concept, you can work on various problems. Okay, you do on your own. I am not going to do, but I will help you. A power n, B power n, C power n. How will you do? Suppose take the bigger input. Okay. In general, how you work on. So I am just helping you. In general, how you work on. Directly don't work on. So assume that A replaced with X. B. So take third scan or fourth scan directly. 2X here 2Y, and directly start from the third scan to get your logic. Okay. Now it start from here. Let's say Q0 is here. Q0 job is to replace A with X and give to Q1. What is the Q1 job? To find the B. Right? A, and then it finds a B. Then what is the job? It will not go back now. It will go forward because C is there. The B replaced with Y, and now Q2 job is different. What is the Q2 job? To find the C and replace with G. And now Q2 will give to Q3. And what is the Q3 job? It skip everything to find the first X and then move to Q0. That's it. Now in this process, skip so many things. Z's and B's and Y's and A's to find the first X. That's it. Now your whole Turing machine is over now, except the last case. Last case, Q0 when it sees the Y, go to Q4, Q3 you have already used. Go to Q4, skip Y and Z to reach the blank. Enough. Can you do? Can you do yourself? Just Q4 job is, when Q0 sees the Y, go to Q4. Q4 का क्या करना है? सारे Y and Z को skip करके ब्लैंक पर फाइनल पे जाना है. पर सेम कॉन्सेप्ट, एक और सिंबल एक्स्ट्रा आया तो A एंड B के बाद C को भी एंश्योर करना है. एवरी स्कैन में A B C को कंपेयर करना है. बस A को X से, B को Y से, C को Z से रिप्लेस करना है हमको. सेम कॉन्सेप्ट. गॉट इट? Can you do yourself? Even I give D power n. You take more states, but you should do in one scan many symbols to compare. Yeah. Done. Takes time. That's why you should have a lot of patience to understand the Turing machine. Right? Writing the programs, designing the Turing machines, like learning algorithms, always takes time. So mostly those people who have patience, they can write well programs, good programs, and they can understand better algorithms. They can solve many problems. It's how much time you spend to understand the problem and to solve the problem is very important. So TOC is kind of patience test. Do you have the patience or not? If you have the patience, you will learn the TOC beautifully.
If you don't have the patience, you will never, of course, you will not give much time to learn. Okay, I hope you will do it. Now we'll move into theoretical part. There are many things to do it, but it's a fast track course, but we'll move into theoretical part, which will help you in the exam lot. Okay, we'll just solve one more problem, not for accepting, just like 1's complement, 2's complement, all of them you try it. 1's complement, it's a functional, right? You are not going to accept. What is a 1's complement? You give one input, it will give you other output. Right? 1's complement. What is a 1's complement? Right? This is your input. What do? Just replace 0 with 1, 1 with 0, right? You start from here, Q0, stay in Q0 only. 0 replace with 1, 1 replace with 0. Move right always. Move right always. When you see the blank, just halt. Don't do anything, just halt. Now here there is no valid invalid input, because every binary input there is a binary output. Here we don't say any valid or invalid case. Previous case, valid input is there, invalid input is there. So how do you design? From Q0, if 0 comes, replace with 1, move right. Another transition, if 1 comes, replace with 0, move right. And when it sees the blank, then keep the blank and move left or right, doesn't matter, halt simply. Now there is no final here, because you are designing to perform certain functionality, like more and milli motion in finite automata. Done? Like similarly, 2's complement, addition of 2 binary numbers, subtraction of 2 binary numbers, multiplication of 2 numbers, right? You can also find x raised to power y. There's so many problems you can do, even factorial of a number. You can do a lot of computation with the Turing machine. Only the problem is it may take time to understand or design the machine. Okay, now let's work on 3 things. Now so far we are learning Turing machine, right? But there are many types of Turing machine. Okay, what we are learning so far, Turing machine, but there is another type of Turing machine, HTM. There is another type of Turing machine, linear bound automata. These are Turing machines only. Only the difference is some kind of functionality or some kind of configuration changes. This Turing machine already we know it, right? What is the definition of this Turing machine? It accepts REL. So if the string is valid, if W belongs to L, halts at final, yes or no? But if W not belongs to L, we don't know whether it halts at non-final, either halts at non-final or never halt. It may not halt at all. So there are 2 choices when the string is invalid. It may not halt or it may halt. But if the string is valid, it always halts. But where it halts, you know it. If it is valid, halts at final. If it is invalid, either it can halt at non-final or never halts. Just like a program behavior in reality. And this HTM is also Turing machine. So another name is a TM that always halts. Halting Turing machine means it is a TM that always halts. Then what is the definition? Same. If W belongs to L, halts, where it halts at final, you know it. If W not belongs to L, previously halt or never halt, now halts only. But you know it, definition, valid halts at final, invalid halts at non-final. So you keep that point with you. Halts at final and halts at non-final. Now see, what case not exist? The never halt case never happens. That is the reason name is halting Turing machine. So Turing machine that always halts is called as halting Turing machine.
that Turing machine always solves. It is also Turing machine, but its nature is always solves. That's why we have a special name, Turing machine that always solves. Everybody, there is no difference except in valid string. Valid string both are working same, but in valid string here we don't know whether we have a logic or not, but we know here we will have a logic. That's why we are able to halt it non-final. Okay, understand the difference. Now LBA, it is HTM that uses linear bounded tape. The tape length is restricted linear. Linear means order of n. If n length input is there, like order of n tape length should be used, not exponential. So that is very important, linear bounded tape. Now if definition is same, it is HTM, right? Only the tape length should be restricted to the length of the input. So linear bounded tape, here tape length is restricted, that's it. Here not restricted. Here tape length can be exponential, doesn't matter, linear or exponential doesn't matter, but here tape length is restricted. You cannot use infinite. Okay, you have to use order of n. Okay, if n length input is there, you should use 2n, 3n or 100n, doesn't matter, but you should not use 2 power n tape length for n length input. So this is a very important here. It is always alts, but only the thing is the tape length should not be used more than linear. Okay, so in algorithm mostly you will understand, you don't have in the syllabus, don't ask much about linear bounded automata, and there is no requirement of learning much, but remember it, what is linear bound automata? It is a Turing machine and it always solves, but the tape length is restricted linearly. That's why name itself linear bounded automata. Okay, here name is halting Turing machine, that means it always solves. Turing machine, no restriction at all. Okay, only restriction is if the string is valid, it should halt at final. If invalid, I don't care, we don't care basically. Some people should understand, W belongs to L means logic exists, that's why it is able to halt. W not belongs to L, don't say logic not exist, we don't know. We don't know logic exists or not. Logic may or may not exist. You can write logic may exist or may not. Here W belongs to L, logic exists, that's why you are able to halt. W not belongs to L, for that also logic exists, that's why you are able to halt. So we don't talk about this, we will talk about this too always. Now you will compare, we will compare this to HTM and TM. HTM and TM. HTM and TM. What HTM accepts so far? Language accepted by HTM is called as, anybody? Decidable language. What is the name? Another name is what? Recursive language. What is the language accepted by Turing machine? Is recursively enumerable language. You can simply call enumerable language. You can simply call enumerable language. Okay. Everyone, recursively enumerable language, also simply you can call enumerable language or enumerable set. You can call recursively enumerable set or enumerable set, both are same. You can write recursively enumerable set or simply enumerable set. Okay. Now we'll work on some synonyms.
because this will help you in the exam. Sometimes they will ask directly synonyms. Now we know what is recursive, what is recursively enumerable, recursive set or recursive language. Here recursively enumerable language. In the exam they ask lot of questions on this, theoretical questions. Many questions are there. Enumerable set or language. What is another name of recursive language? Decidable language, another name. Okay, we'll just work on synonyms. What is another name of recursive? You can say Turing decidable. You can give another name, Turing decidable. There are many names that are actually same. Equivalent. Equivalent. This recursive language you can also say TM, Turing machine, can enumerate or enumerable in lexicographical order. Simply enumerable in some dictionary order or lexicographical order or effective order. Lexicographical order. Simply you can say effectively enumerable, but you can say effectively enumerable language. Okay, they are all synonyms for the recursive language. In the exam they may ask decidable, they may ask Turing decidable, or they may ask lexicographical order, enumerable or effectively enumerable. You just assume it is a recursive language. For that language you always have halting Turing machine. Okay, and do not misunderstand any statement here, because they all are same. And when it comes to recursively enumerable language, there are again many equivalent words. Recognizable language. Who can recognize this? Or you can call enumerable language. Who can recognize this? Turing recognizable. Turing machine, right? The Turing recognizable language. Or you can call enumerable language. Who can enumerate it? Turing enumerable. Okay. Enumerable, this one is effectively enumerable. Look at the difference. Effectively enumerable, enumerable. Okay. Now don't call Turing decidable. We don't know. It might be Turing decidable or it might not. It may not be. Any other point we are missing here? No. There is another. This one is called as decidable, right? This one is called as semi-decidable language. What is another name? Semi-decidable language. The name only. Semi also called as partial. Okay. Synonyms of the recursive language and recursively enumerable language. Okay. In the exam they are saying semi-decidable. So assume it is recursively enumerable only. There is no difference between these two names. Okay. Now what is the relationship? Now look at, can I call every recursive is recursively enumerable? If that is true, there are many sentences are going to come now. Every recursive is real, but every real need not be recursive. The reason is, look at this relation. These are all recursive languages, decidable languages, right? And this one all are reals. Now you look at the relation, every recursive, these are all recursive languages. Every recursive is also called as real because all these languages are there in this reals class. So now the relation is going to come. Now that relation is very important for the exam. Note, every recursive
recursive language, what is it? Is REL. But can you say every REL is recursive? No. REL need not be recursive, may or may not be recursive. How do you know that? Because you see this diagram, this is REL but not recursive, this is REL but also recursive. So RELs, both are RELs, but some are not recursive, some are recursive, right? Both are RELs only, but these are not recursive, these are recursive. And if you take a recursive, it is always REL, but if you take REL and sometimes recursive, sometimes not recursive. I hope you are getting clear. So what is REL? It may be recursive, may not be recursive. But what is recursive? It is always REL, but it is not a synonym. Remember that. It's just implication. Do not say recursive and REL are same. Wrong. Right? Recursive and REL are having different definition. This recursive is always having HTM. So you also have a TM. Recursive is subset of REL. Wrong sentence, Prabal. So this I used to say in my class many times. Please don't use the word recursive is a subset of REL. No. This is the wrong word completely. Recursive language is not a subset of, don't know at all. Recursive language is the subset of REL. Is it right statement? Wrong statement. Note, this is a wrong statement. What is the correct? Set of all recursives. Both are different completely. Set of all recursive languages. This set is the subset of set of all RELs. This is the correct way to speak. There is another correct statement. You can call every recursive. Recursive is REL you can call, but don't say subset. Recursive language is REL. That's okay. Is means implication. That's okay. Use the statement properly. Recursive is, don't say subset of REL. We don't know which recursive, which REL you are talking about. Even regular languages, you cannot say subset of regular because one regular, other regular may not have a relation. Okay. So be careful what you are speaking. Don't use a subset word unnecessarily when you don't understand even subset definition. Okay. This entire circle is a subset of this entire box. But see, one recursive I took, other recursive I took, they may not have a relation sometimes. Example, this might be A star, this might be B star. What is the relation? You can't say subset. A star, B star have no relation. We are not talking about a recursive language. We are talking about set of all recursive languages. Okay. When recursive only not having a relation with the subset. Okay. How do you talk about recursive REL? Now look at every recursive is REL. But REL may or may not be recursive. Using this line, there are many points. Every decidable is a semi-decidable, and every effectively enumerable set is semi-decidable, but semi-decidable may or may not be decidable, and enumerable language may or may not be recursive. Turing recognizable language may or may not be Turing decidable. So you should know all this relation because recursive language implies REL. We used it. Now this is also applicable to all other equivalent statements. Is it clear? That statement can give you lot of inference statements. Okay. ये बात समझ में आना चाहिए यार. ये जो स्टेटमेंट लिखा है सिर्फ रिकर्सिव के लिए नहीं, यहाँ डिसाइडेबल भी ले सकता, ट्यूरिंग डिसाइडेबल भी ले सकते, इफेक्टिवली एन्यूमरेबल भी ले सकते हैं हम. सारे यहाँ पर एप्लीकेबल होता है. ठीक है. REL की जगह में सेमी डिसाइडेबल, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल, एन्यूमरेबल सारे एप्लीकेबल है. ठीक है. यार एक टेबल लेंगे हम, बड़ा टेबल तो नहीं लेंगे, हम छोटा टेबल लेंगे. एग्जाम के लिए ये टेबल एनफ है मोस्टली. अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आपको खुद ही नोट्स में देखना होगा आपको. ठीक है. यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, ये रिकर्सिव लैंग्वेजेस मान ला, रिकर्सिव लैंग्वेजेस और सेट, ये आरईएल्स। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है यूनियन, सेकंड इंटरसेक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टीज। एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज। और कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस मैं नहीं कर रहा हूं, इसे कर सकते होंगे आप। कंकैटिनेशन, फिफ्थ रिवर्सल। ठीक है, 5 मेन प्रॉपर्टीज को मैं यहां ले रहा हूं। कलर क्या मिस किया है, येलो। ठीक है, यूनियन दोनों के लिए क्लोज्ड है, इंटरसेक्शन भी दोनों के लिए क्लोज्ड है। और इसरो में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, अगर कोई इंटरव्यू में जा रहा है इसरो एग्जाम में, अगर इसरो एग्जाम क्वालिफाई किया है और इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो इनकी प्रूफ पढ़ के जाना। क्यों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ आरईएल नीड नॉट बी आरईएल, कैन यू प्रूव इट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव इज रिकर्सिव, कैन यू प्रूव इट? सो दे विल आस्क दिस क्वेश्चंस। ओके, क्लोज्ड, ये याद रखना होता है आपको, नॉट क्लोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और बाकी सारे क्लोज्ड है यहां पर। तो सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट आरईएल के लिए आपको पढ़ना होता है मेनली। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है डिसाइडेबल लैंग्वेजेस के लिए क्लोज्ड होता है और सेमी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस के लिए नॉट क्लोज्ड होता है। क्यों? आरईएल कॉम्प्लीमेंट होता है, आंसर नीड नॉट बी आरईएल। तो ये स्टेटमेंट्स का आपको याद रखना होता है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव हमेशा रिकर्सिव होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आरईएल मे और मे नॉट बी आरईएल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, रिकर्सिव सेट और लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हमेशा रिकर्सिव होता है। प्रूफ ऐसे होता, अगर कोई भी रिकर्सिव लैंग्वेज के लिए अल्टरनेटिव ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया है, इसी को लेके आप कॉम्प्लीमेंट का भी बना सकते हैं। आप अगर W बिलोंग्स टू L है और W नॉट बिलोंग्स टू L है, तो ये फॉर L के लिए बनाया, तो L कॉम्प्लीमेंट के लिए भी HTM बना सकते हैं इसी मशीन को यूज करके। इसी मशीन को यूज करके HTM फॉर L कॉम्प्लीमेंट के लिए भी बना सकते हैं आप। कैसे बनाओगे? कोई स्ट्रिंग दिया है W और इसी को देना, अगर ये बिलोंग्स टू L बताया तो आप नॉट बिलोंग्स टू L कॉम्प्लीमेंट L बताना। और देखो ये नॉट बिलोंग्स टू L है, तो यहां क्या होगा? W बिलोंग्स टू L कॉम्प्लीमेंट होगा। और दोनों के लिए लॉजिक होगा, तो इसलिए दोनों के लिए लॉजिक होता है। तो यही मशीन यूज करके कॉम्प्लीमेंट के लिए भी बना सकते हैं आप, राइट? अनडिसाइडेबल वर्ड में अब तक यूज नहीं किया, अगर आप यूज कर रहा है तो थोड़ा स्टॉप करो दिमाग को। ठीक है, इस लेक्चर तक मैं वर्ड अनडिसाइडेबल यूज नहीं किया किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट? सिर्फ डिसाइडेबल सेमी डिसाइडेबल पढ़ाया ये, और आगे जाके दूसरा वर्ड लेके आ रहा है। पहले अनडिसाइडेबल का डेफिनेशन पता होना चाहिए ना। ठीक है, इसलिए रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हमेशा रिकर्सिव होता है। क्यों? रिकर्सिव के लिए HTM है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव के लिए भी HTM है, तो इसलिए हमेशा रिकर्सिव होता है। बट आरईएल के लिए प्रूव नहीं कर सकता, यहां पर लॉजिक हो सकता नहीं हो सकता, तो बिलोंग्स के लिए लॉजिक दिखा नहीं सकते हम। क्यों? 2 चॉइसेस होगा, तो इसलिए आरईएल का कॉम्प्लीमेंट होता है सॉरी, आरईएल कॉम्प्लीमेंट होता है नीड नॉट बी आरईएल। बट ये आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनालाइज करना होगा। मैं लिख रहा हूं बट आपको एक्चुअल नोट से एनालाइज कर लेना। ये आंसर होगा आइदर रिकर्सिव होता है और नॉट आरईएल होगा।
अगर आरईएल कॉम्प्लीमेंट आरईएल हुआ वो रिकर्सिव होता है, अगर आरईएल का कॉम्प्लीमेंट नॉट आरईएल हुआ तो वो रिकर्सिव से बाहर है, रिकर्सिव क्लास से बाहर है। तो दो टाइप की लैंग्वेजेस है, इस क्लास डायग्राम में आपको पता चलेगा। इस क्लास डायग्राम में देखो ये जो लैंग्वेज है ना, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस है। अगर इसमें किसी को भी L1 मान लो, इसका कॉम्प्लीमेंट किया सीधा बाहर चले जाएगा वो। अगर इसका मान लो ये L2 मान लो, जो भी है L2 मान लो, इसका कॉम्प्लीमेंट किया इसी के अंदर रहेगा वो। क्यों? वो रिकर्सिव है, रिकर्सिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा रिकर्सिव होता है। ये रिकर्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए लॉजिक नहीं था, तो इसलिए यहां पर है। तो ट्यूरिंग मशीन जब डिजाइन किया है, अगर इनके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन किया है, इनवैलिड के लिए लॉजिक नहीं बनाया, इसका मतलब लॉजिक नहीं बता सकते आप। लॉजिक हो सकता, नहीं भी हो सकता। देखो इस लैंग्वेज के लिए इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए भी लॉजिक है, बट लॉजिक बनाना जरूरत नहीं है। कि जब ट्यूरिंग मशीन बनाओगे तो इनवैलिड के लिए लॉजिक बनाना जरूरत नहीं। जब एचटीएम बनाओगे, इनके लिए दो चॉइसेस है, एचटीएम भी बना सकता, ये आरईएल के अंदर भी है, टीएम भी बना सकता। तो ये लॉजिक बहुत कम लोग को पता है। जब L2 के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाया तो एचटीएम होगा नहीं होगा, वो प्रॉब्लम को देखना होता। अगर प्रॉब्लम इसके अंदर है वो एचटीएम होगा, डीएम दिया होगा। रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं ना। तो अगर इनवैलिड के लिए लॉजिक नहीं बनाया तो लॉजिक नॉट एग्जिस्ट नहीं बता सकते। लॉजिक मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट। अगर लैंग्वेज इसके अंदर है तो लॉजिक इनवैलिड के लिए भी होगा, बट ट्यूरिंग मशीन में बताया नहीं होगा, बट होगा। और यहां इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाया तो इनवैलिड के लिए लॉजिक नहीं होगा। अगर इनका कॉम्प्लीमेंट किया वो नॉट आरईएल है। क्यों? आरईएल से बाहर नॉट आरईएल होता है। ये रिकर्सिव लैंग्वेज है, उसकी कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव होता है। अब देखो आरईएल का कॉम्प्लीमेंट ये रिकर्सिव हो सकता है, नहीं तो नॉट आरईएल हो सकता है। देखो आरईएल में दो जगह में आरईएल रह सकता, रिकर्सिव के अंदर, रिकर्सिव के बाहर। तो जब रिकर्सिव के अंदर है आरईएल का कॉम्प्लीमेंट आरईएल होता है, अगर रिकर्सिव से बाहर है आरईएल का कॉम्प्लीमेंट नॉट आरईएल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए यहां लेकर आए हम आरईएल कॉम्प्लीमेंट आइदर रिकर्सिव होगा और नॉट आरईएल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीड नॉट बी आरईएल तो है, एग्जैक्ट इसमें क्या है, एक और नाम है इस क्लास के अंदर, वो नाम है, ये जो क्लास, ये दो क्लास का बीच में है ना, वो है ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये है ऑल RELs but not recursives, but they are not recursive। ये REL के अंदर है बट रिकर्सिव लैंग्वेजेस नहीं है। तो ये है, ये जो लैंग्वेजेस को कोई भी लेके कॉम्प्लीमेंट किया है वो सीधा बाहर जाएगा। क्यों? इसमें इनवैलिड के लिए लॉजिक नहीं होता। जब कॉम्प्लीमेंट किया इनवैलिड वैलिड हो जाता, उनके लिए लॉजिक नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए इसकी कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं है, बट इनके लिए ट्यूरिंग मशीन है, राइट। ये REL बट नॉट रिकर्सिव लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट किया सीधा नॉट REL होता है। तो ये भी आपको याद रखना होता है कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी REL लैंग्वेज लिया है बट वो नॉट रिकर्सिव क्लियरली बता रहा है, वो रिकर्सिव नहीं है, तो इनको कॉम्प्लीमेंट किया है, सीधा आंसर होगा नॉट REL, राइट। तीन टाइप की लैंग्वेजेस को कॉम्प्लीमेंट किया है, एक रिकर्सिव है, दूसरा REL है, तीसरा वो रिकर्सिव से बाहर REL के अंदर है, वो REL बट नॉट रिकर्सिव। इनका कॉम्प्लीमेंट होता है नॉट REL। रिकर्सिव के लिए भी ट्यूरिंग मशीन होता है, बट ट्यूरिंग मशीन ऑल्टिंग ट्यूरिंग मशीन भी होता है, और REL के लिए ट्यूरिंग मशीन होता है, बट ऑल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगा नहीं होगा वो नहीं पता। क्यों? REL के अंदर रिकर्सिव भी है, नॉट रिकर्सिव भी है। और REL बट नॉट रिकर्सिव मतलब इनके लिए HTM नहीं होता, सिर्फ TM होता है। क्यों? इनके लिए इनवैलिड स्ट्रिंग नहीं होता है, इसलिए इनकी कॉम्प्लीमेंट नॉट REL होगा। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट गेट क्वेश्चन है, इसलिए इनके आंसर होता है दूसरा, नेवर बी REL बट नॉट रिकर्सिव। जब REL को कॉम्प्लीमेंट करो कभी REL बट नॉट रिकर्सिव नहीं होता है, इम्पॉसिबल है REL बट नॉट रिकर्सिव होना। किसी को भी करो, रिकर्सिव को किया तो रिकर्सिव होता है, और ये REL बट नॉट रिकर्सिव को किया वो नॉट REL होता है। तो REL को कॉम्प्लीमेंट करने के बाद कभी भी REL बट नॉट रिकर्सिव का लैंग्वेज नहीं आएगा। ठीक है, इसको एनालाइज कर लेना इस पॉइंट्स को। और जो कल की सेशन जो होने वाला है, तो अभी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। ठीक है, कल जो होगा, देखो हमको पता है लैंग्वेज, राइट।
और सेट जो भी है, और प्रॉब्लम, बहुत सारे हो सकता है, कभी कभी प्रॉब्लम में भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। ये लैंग्वेज सेट एक टाइप है, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया लैंग्वेज में, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, तो लैंग्वेजेस एंड प्रॉब्लम्स दो टाइप होगा, है ना। मेनली डिसाइडेबल होगा, रिकर्सिव बोलते हैं ना, और मेनली दो टाइप नहीं पढ़ना है आपको, तीन टाइप पढ़ना होता है। डिसाइडेबल लैंग्वेज, दूसरा नाम है RE बट नॉट रिकर्सिव। ये अच्छा होता है नाम पढ़ना और समझना भी बहुत इजी होता है। और थर्ड होता है नॉट REL, नॉट REL, REL बट नॉट रिकर्सिव। डिसाइडेबल का दूसरा नाम है रिकर्सिव। अब देखो ये दोनों REL के अंदर होता है, ये दोनों किसके अंदर होता है, ये दोनों, ये भी REL है, ये भी REL है, और ये दोनों जो दिख रहा है ना यहां पर, ये REL बट नॉट रिकर्सिव एंड नॉट REL, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों होता है अनडिसाइडेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिसाइडेबल ये है बट ये दोनों अनडिसाइडेबल है। डिफरेंस क्या है, इनके लिए HTM है, ये दोनों के लिए HTM नहीं है। तो अनडिसाइडेबल मतलब नॉट डिसाइडेबल, नॉट डिसाइडेबल मतलब नॉट रिकर्सिव, नॉट रिकर्सिव मतलब नो HTM एग्जिस्ट। ये बात, ये मीनिंग समझ में आना चाहिए, हमेशा याद रखना। नॉट रिकर्सिव मतलब HTM नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब TM हो सकता, नहीं भी हो सकता। देखो ये अनडिसाइडेबल है, ये भी अनडिसाइडेबल है, और इनके लिए TM है, इनके लिए TM नहीं है, बट दोनों के लिए HTM नहीं है, इसलिए नॉट डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल, नॉट रिकर्सिव, HTM नॉट एग्जिस्ट, ये इनकी कॉन्सेप्ट है, राइट। इनके लिए TM भी होगा, HTM भी होगा, क्यों, ये डिसाइडेबल लैंग्वेज है। HTM हमेशा होगा बट TM डिजाइन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ये दोनों के लिए TM होगा बट इनके लिए HTM नहीं होता, इनके लिए HTM होता है, राइट। ये दोनों अनडिसाइडेबल है बट इनके लिए TM होता, इनके लिए TM नहीं होता, एंड दोनों के लिए HTM नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा तरीके से पढ़ लेना। मैं एक और बार लिख रहा हूं बट अलग अलग वे, ठीक है। डेफिनेशन तो समझ में आना चाहिए, अनडिसाइडेबल कौन है, डिसाइडेबल कौन है। यहां पर तीन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट जो मीनिंग है, इनके लिए HTM होगा हमेशा, इनके लिए HTM नॉट एग्जिस्ट, इनके लिए भी HTM नॉट एग्जिस्ट। ये HTM बारे में, ठीक है। टेबल बनाओ, क्या इजी होता है मुझे टेबल बनाना भी, टेबल बना लेते इसको, ठीक है। HTM और TM, ठीक है। HTM के लिए बता रहा है और TM, ये दोनों होगा यहां पर, बट एक्चुअल डेफिनेशन तो HTM का है, और ये HTM नहीं होगा, TM होगा, या दोनों नहीं होगा। बात क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये डिसाइडेबल लैंग्वेज है तो हमेशा HTM होगा, बट आपको TM डिजाइन करना है तो TM भी डिजाइन कर सकते हैं। वो TM HTM जैसे दिखाना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये HTM नहीं होगा बट TM होगा, यहां दोनों नहीं होगा, ठीक है। ये देखो HTM नहीं है दोनों के लिए तो अनडिसाइडेबल है, राइट। ये दोनों के लिए TM है तो दोनों REL है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है। तो अगर TM है, ये दोनों के लिए TM है तो दोनों REL है, ये दोनों के लिए HTM नहीं है, दोनों अनडिसाइडेबल है, और सिर्फ इसके लिए HTM है तो ये डिसाइडेबल है, ठीक है। नो HTM मतलब अनडिसाइडेबल, बिल्कुल सही है। नो HTM मतलब अनडिसाइडेबल। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ वर्ड को यूज करना होता, राइट। इसलिए देखो ये REL तो है फिर भी अनडिसाइडेबल है, राइट। क्यों, उनके लिए HTM नहीं है। REL बट नॉट रिकर्सिव के लिए, REL बट नॉट रिकर्सिव के लिए HTM नहीं है, मतलब ये अनडिसाइडेबल है। देयर इज नो HTM मतलब इट इज अनडिसाइडेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसको, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आना, हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने वाला है। तो आज ये किया है, ट्यूरिंग मशीन को समझने के लिए कोशिश किया है, और
कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज देखा है बट नॉट विद द रीजन, आपको पता है रीजन नहीं बताया, और कुछ लैंग्वेजेस एक्सप्लेन किया है, डिसाइडेबल और ही बट नॉट रिकर्सिव, नॉट और रियल, ठीक है। और एग्जांपल्स कल देखने वाला है। होमवर्क, अगर किसी को भी होमवर्क करना है तो आप डिजाइन करो डिजाइन HTM क्वेश्चन 1, डिजाइन TM, डिजाइन TM पर WW⁴, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता होगा, कोशिश कर लेना डिजाइन करने के लिए। फर्स्ट वन। सेकंड, इससे क्या होता है, आपको ट्यूरिंग मशीन अच्छे से कंफर्टेबल होगा कॉन्फ़िगरेशन। डिजाइन TM टू एक्सेप्ट W⁴, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। मैं क्लास में नहीं किया है ना, ऑलरेडी तो A⁴N B⁴N C⁴N दिया है, तो उसी को कर लेना, डोंट मिस इट। डिजाइन TM पर W⁴, इसको भी कर सकते हैं आप। एक और भी कोशिश करना, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी बहुत इजी होता है। डिजाइन TM पर टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी इनपुट को रिवर्स देना जरूरत नहीं, आप आगे जाके लास्ट में जाके भी पीछे कर सकते हैं, आप पीछे स्कैन कर सकते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी, या सम PYQs क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर किसी को भी PYQs को देखना है, यार पूरा PYQ एक वीडियो बनाया हम लास्ट ईयर, तो उस PYQ वीडियो को भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो यहां पर मेन चीज जो है, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करना है और PYQ करना है। यार इतना लंबी सेशन फास्ट ट्रैक में नहीं कर सकते, बट सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है और उसका रेफरेंस भी दे रहा है हम। अगर रियली आपको सारे PYQ का सोल्यूशन चाहिए, यार लास्ट ईयर PYQ सीरीज चलाया हम इसी चैनल पर, आप वीडियो देख सकते, TOC PYQ का वीडियो, एक वीडियो में सारे हम सॉल्व किया था। 2 वीडियो होगा शायद, मोस्टली एक वीडियो और 2 वीडियो, याद नहीं है, एक वीडियो होगा मोस्टली, 8 घंटे से 10 घंटे बीच में है वो वीडियो, ओके। या कल क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस, सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम नहीं छोड़ रहे हैं ना, जो गेट में पूछा जाएगा उसी के लिए तो हम कर रहे हैं काम। ये सीरीज इसलिए चला रहा है आपको फायदा होने के लिए। वी आर डूइंग फॉर attempting the gate exam to get more marks, right? If you are able to solve 60, even 60% of the gate PYQs, that means you are doing good, and just learn some other things to make more practice. No, because they will never ask number of states in PDA, because PDA can be designed with one state, Turing machine can be designed with 2 states for any RL. That is why they don't ask these questions. How many states in PDA? No, because you can design always with one state with the help of algorithm, context free grammar to PDA conversion algorithm. And you can always design Turing machine with 2 states, again with the help of algorithm. So these questions will never be asked how many states you take for the Turing machine, how many states you take for PDA, never be. कल TOC कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, राइट। मोस्टली मंडे से आपको कंपाइलर स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। Super 1500 something different, right? It's beyond your imagination. The questions that you see, the level of the questions are completely different. Maybe you cannot find in any test series also, because we are trying to do something
very fantastic in Super 1500. Okay, those people who are prepared at least once, they just have a good practice there. Like they do it wrong and they will find out their mistakes. What is our assumption is, we are trying to find out your mistakes in Super 1500. We know exactly where you do the mistake. So we are bringing such kind of level of data and questions, and we are making you to do the mistake and find out your mistakes. So most of the students are able to do it. Even most of the students are finding their mistakes too. Okay. Yes, Yashu. Ask Yashu, those people are watching 1500, ask them, really it's going to help you. कल करेंगे हम काउंटेबल, एन्यूमरेबल, डिसाइडेबल का डिफरेंसेस. ठीक है, रिमाइंड करो जिले का. हिरण, सबका कमेंट देखता हो ना. Okay, it's all right because it's very difficult to read the comments while explaining the concepts. आपको पता होगा. Okay, because I do care, I do more work to read the comments. It's very difficult to read everybody comment and reply it. It's not that easy, right? Even I ignore sometimes if I'm not able to read it. Compiler mostly. Yes, test series you should start as soon as now onwards or as soon as you feel confident. अगर देखो यार 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो रिवीजन कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे होगा? तो टेस्ट सीरीज सामने होगा तो आप ये काम करोगे, जो क्लास नोट्स में है उसको रिवीजन प्रैक्टिस करके, गेट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके, टेस्ट सीरीज को आप सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए ना. वेट नहीं करना है. क्यों? ये 4-5 सब्जेक्ट जो प्रिपेयर किया है भूल जाओगे. तो डेली 1-2 घंटे टाइम निकाल के रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो. इस देना चाहिए अनिश. अगर आप 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो ऑलरेडी यू शुड हैव स्टार्टेड. अभी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? लास्ट 2 महीने में क्या होता है, टाइम कम होता है यार, इतने सारे टेस्ट नहीं हो पाता. रिवीजन भी करना है और पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस करना है, टेस्ट को भी देना है. यार लास्ट 2 महीने तो करना है, बट पेंडिंग मत रखना, अभी से थोड़ा थोड़ा करके जाना. क्यों? जो पढ़ लिया उसका भी रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो लास्ट 2 महीने तक याद रहना चाहिए ना जो ऑलरेडी किया है. You could have started and you should start immediately. That will help you a lot. ऐसा नहीं यार लास्ट 2 महीने में नहीं कर सकते, कर सकते, बट उस टाइम में प्रेशर ज्यादा होता है. तो उस टाइम में प्रेशर रिलीज होने के लिए अभी से कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो, साथ में जितना पॉसिबल टेस्ट है उतना करते रहो. लास्ट 2 महीने में आपके लिए यार मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए, आपको यार कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए. हमेशा पहले टॉपिक वाइज देना, जब टॉपिक वाइज कॉन्फिडेंस मिल रहा है पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो. तो अब बहुत लोग ये टॉपिक वाइज नहीं करते बट सब्जेक्ट वाइज करते हैं. तो वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होता, एक बार 1 घंटे में रिवाइज करना और रिकॉल करना कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो इसलिए आप टॉपिक वाइज करो तो मास्टर हो जाओगे हर टॉपिक में. जब बहुत सारे अप्रोचेस याद रहे तो कॉन्सेप्ट भी याद रहे और अप्रोच भी समझ में आया तो डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना तो बहुत इजीली होता है. हमेशा छोटी टॉपिक को जल्दी करना, पहले करना और उसके बाद पूरा सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल में करना. और मॉक टेस्ट जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होता है तो मॉक टेस्ट देना. मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है, जब तक टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज नहीं किया तो मॉक टेस्ट टच मत करना. कि उसमें क्या यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता तो अब मार्क्स कम आएगा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं आप. Everybody agrees, Sasikala, I'll do it because I'm trying here also, right? I'm not always doing in one language. I'm trying to do into both of them. Okay. Okay. So don't argue, right? I'm just trying to manage in both. So follow it. We are learning in English, we know Hindi, right? So, all right. Chalo, see you. Yes, Satyam, you have to learn basics.
या पर्सनल मैसेज भी आता है सर, तो हिंदी में पढ़ाओ और इंग्लिश में पढ़ाओ, और दोनों मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यार. दैट इज द प्रॉब्लम, वी डोंट रीड द कमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स हैव मल्टी ओपिनियंस, वी कैन नॉट satisfy everybody in the world, right? Wait, I think it's 2 more months, 2 to 3 months. You have time, right? It's just question practice. It doesn't matter how many days it takes. That will help you to boost your confidence. Super 1500 ये आपके लिए एक फ्रेंड है, राइट? तो साथ में आप प्रैक्टिस करते रहो. इट्स नॉट योर अलग प्रिपरेशन, इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिविजन. You are testing your knowledge, so it's a kind of advantage. So don't worry about when will it complete. Just do it whenever you get the time. You have a PW test series, right? We are personally making the videos for every question and we are helping to understand. So no need to confuse. You are following here, then just take the test series and work on practice regularly. Okay, see you then. We'll meet tomorrow. Bye bye. Take care.